Hello students, how are you? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosip sir, and I would like to also welcome you all in this online education session organized by the Noblehood School. Student, as you know, we were discussing about the chapter number 12 of the 10th standard science physics section. In previous lecture we have just started this unit, electricity, and we have gained the brief idea about the electricity. Meaning of the electricity is actually the electric current, which is the rate of flow of charge per unit time, and the charge which is actually flowing in the electric current is the electrons consist inside the material. There are two types of material present. First one is the conductor material, which allows the electric charges to flow, and second type of insulators which do not allow to flow the charge of electrons because it does not have any kind of free electrons, while the conductor is having a number of free electrons. So basically this is the game of number of free electrons. The more the number of free electrons, the material becomes the more conductor or the superconductor of electricity, while the if material is not having a free electrons, then it is a insulator which do not conduct any kind of electricity. Okay. So this was the basic idea behind the insulators and the conductors. Then after we have discussed about the equation form of the electric current, which is I is equals to Q divided by T. I is equals to Q divided by T. Charge upon time. Flow of charge upon time. So the flow of charge is nothing but the flow of electrons per unit time. So according to this equation, the SI unit of the electric current is Coulomb per second actually. And because of the great contribution of the Andre Marie Ampere scientist, the electric current unit is based on the name of that scientist, Ampere. So the electric current SI unit is Ampere. Then after we have calculated one example also, in which we have calculated about the charge flow through a filament bulb, which was 300 coulomb. And then after we calculated the number of electron constituting 1 coulomb of charge. So 1 coulomb of charge is having a 6.25 multiplied by 10 raised to 18 number of electrons. So these are the number of electrons that constituted inside a 1 coulomb of charge. And we also studied that the device or the instrument used to measure the electric current is the ampere meter, which is known as ammeter. Now in today's lecture we are going to discuss about the potential difference. The student, you wonder about this topic, that sir, what is the meaning of this topic? Why we need to study this kind of topic after the electric current? So student, as we discussed earlier, the rate of flow of charge. So flow of charge, flow means the movement of any substance, and the substance is going under any kind of movement is because of the external unbalanced force. So to flow or to create a flow of any substance, we need to provide a certain amount of force. Okay.
सो अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाना हो तो हमें किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स को पिक्चर में लाना पड़ेगा या तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके जो ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट में आएंगे। Now the question is, what makes an electric charge to flow? कौन सी ऐसी चीज है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाती है? तो जस्ट टू टेक वन एग्जांपल, यहां पे आपको कोई दो टैंक दिए गए हैं। हियर द टू टैंक इज गिवन, ए एंड बी। अब जैसे कि आप देख रहे हो स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों टैंक के अंदर पानी का जो लेवल है वो सेम है, नियर अबाउट सेम है, और उन दोनों टैंक्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे एक पाइप से। सो टैंक ए एंड टैंक बी बोथ आर कनेक्टेड विथ अ पाइप। अब पाइप के साथ कनेक्ट कर देने से फायदा ये होगा कि दोनों में से जो पानी है वो फ्लो कर पाएगा। बट इन अ रियल सेंस, कैन वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए इफ द लेवल ऑफ वाटर इज सेम इन दिस बोथ टैंक? मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, क्या पानी का लेवल सेम होने के बावजूद भी ए में से बी में या तो बी में से ए में वाटर फ्लो करेगा? देन अवर आंसर इज एब्सोल्युटली नो, बिकॉज सर द लेवल इज सेम, सो द वाटर विल नॉट एबल टू फ्लो। सो टू क्रिएट अ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी वेदर और फ्रॉम बी टू ए, व्हाट वी विल डू? अगर ए से बी तक वाटर जो है वो जाएगा या तो बी से ए तक फ्लो करेगा। So to create that flow, what we will do? Simple, we would create the difference of water level. यानी कि पानी जो पहले हमारे पास इस लेवल में दोनों टैंक के अंदर भरा हुआ था, अब क्या करेंगे? किसी एक टैंक को खाली कर देंगे इतना। So in order to flow the water from tank A to tank B or from tank B to tank A, यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगर इस तरीके से पानी का लेवल हमने घटा दिया तो देखो पानी का लेवल यहाँ पे, आई विल ट्राई सम डिफरेंट कलर टू शो। यहाँ पे पानी का लेवल इतने तक घटा दिया मैंने और यहाँ पे पानी का लेवल यहाँ तक का है। So now the water level is more in B compared to the A tank. So the water will now flow from B to A. और जब दोनों में वापस सेम हो जाएगा तो वापस कांस्टेंट फ्लो मेंटेन कर लेगा, सॉरी कांस्टेंट हाइट लेवल मेंटेन हो जाएगा, फिर फ्लो होना पानी बंद हो जाएगा आफ्टर हैविंग अ इक्वल height of water. But this condition, this flow of water is only because of the difference of height. So यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पानी का लेवल इतना ज़्यादा था और यहाँ पे पानी का लेवल just a second इतना कम था. So there is a difference between the water level in both the tanks, and this difference of water level, actually the height difference between the two tanks of water is the cause of flow of water. So similarly, if we want to create a flow of electron, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्रिएट करना है, so in order to create a flow we need to create some difference in an electric way. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें कुछ डिफरेंस क्रिएट करना होगा, तो वो सर कैसे करेंगे? सो उसी के लिए कंसेप्ट है पोटेंशियल डिफरेंस.
पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। जैसे हमने पढ़ लिया 9th स्टैंडर्ड में कि एक होती है पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज kept at a state of rest, then the energy is called as the potential energy. So potential energy के बारे में हमने पढ़ा था और यहाँ पे हम पढ़ेंगे potential difference के बारे में. So actually what is the meaning of potential difference? Let us try to look about it. So as we discussed earlier, that to create a flow for the electron, there should be a electric pressure difference, which is called as the electric potential difference. यानी कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, so we need to create a electric pressure difference, which is called the potential difference. Now, which element will create this difference? अब ये difference create कौन करेगा? चलो उसमें तो पानी था तो हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? No, because it is an invisible thing. So in the real sense, what we will do? We will use a battery, and the difference of potential may be produced by this battery. पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो बैटरी के द्वारा प्रोड्यूस यहाँ पे हम कर पाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इनसाइड द बैटरी, दैट इज द रियल कंसर्न फॉर अस कि अब बैटरी के अंदर क्या होता होगा। सो इनसाइड द बैटरी द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल. So in the actual way, the chemical action within the cell generates the potential difference across the terminal of the cell. So actually the potential difference is created with the help of battery, and the reason to create this potential difference in order to flow the number of electrons. So let us define this potential difference. So now we are defining the electric potential difference. Student, please focus in this point because it is very important for your syllabus concern. The first thing which is important is the electric current, and the second is the potential difference. Current is because of the electrons which is held by each and every material. They are having a plus or in a minus amount free electrons. So let us try to define the electric potential difference. Electric potential difference between 2 points is defined as the work done to move a unit charge from one point to another. नहीं समझ में आया? समझो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 2 पॉइंट के बीच का. मतलब एक टर्मिनल यहाँ पे है, एक टर्मिनल यहाँ पे है. So in order to create difference, we need 2 terminals. So to transfer electron from here to here, उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है चार्ज के ऊपर, क्योंकि चार्ज जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वही यहाँ से यहाँ मूव करते हैं. So in order to move the unit charge from one point to another, a work done is required. वर्क डन हमें उसके ऊपर करना पड़ता है चार्ज को मूव करवाने के लिए. So this work done which is required to move a unit charge from one point to another is nothing but the potential difference V between 2 points. So the potential difference between 2 points is known as the W upon Q, amount of work done to move a unit charge from one point to another point. V is equals to W over Q, where V is equals to potential difference, W is equals to work done, and Q is the flow of charge. So
To move a unit charge, the required amount of work done is considered as a potential difference V. Now the thing is to define, after defining the potential difference, we need to establish its SI unit. So according to this, work done SI unit is joule. Work done is a one form of energy, so its unit is joule, while the unit of charge is coulomb. So potential difference V is equals to joule per coulomb. So in a general sense, the unit of potential difference is joule per coulomb. बट वोल्टा करके साइंटिस्ट था, उसका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर बहुत था पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, तो उसके सम्मान में इसका यूनिट रखा गया वोल्ट वी. So in both of this physical quantity, first is electric current and second is the potential difference, two general units which is just a second, yes, the unit of electric current is coulomb per second in general sense, and according to one scientist name it is ampere. Okay, while the unit of potential difference V is equals to joule per coulomb, in which joule is the unit of work done while the coulomb is the unit of charge. So joule per coulomb is the SI unit of potential difference, or you can say as per the scientist name it is volt. The instrument which is used to measure potential difference is voltmeter. वोल्टमीटर नाम करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है कि जो वोल्टेज मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिकली. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस V, द डिफरेंस दैट वी नीड टू क्रिएट टू फ्लो द चार्ज. Let us understand deeply about this concept potential difference with the example. How much work is done in moving a charge of 5 coulomb across 2 points having a potential difference of 20 volt. यानी कि हमें 5 कूलम्ब के चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन लगेगा कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है. यानी कि हमें चार्ज की वैल्यू दी गई है 5 कूलम, हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी गई है 20 वोल्ट, और हमें ये ढूंढना है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितनी लगेगी, कि वर्क डन कितना हमें करना होगा कि ये 5 कूलम चार्ज जो है वो 20 वोल्ट के डिफरेंस से मूव हो पाए. सो सिंपली द इक्वेशन इज V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, in which we have a value of V and Q, so that we can easily find out the work done W. P is equals to W over Q, the equation is, and W, if we want to find W, then Q is going on the left hand side direction of the voltage V. So W is equals to V multiplied by Q, and hence 20 volt multiplied by 5 coulomb of charge. So ultimately 100 joule work done required to move a 5 coulomb of charge. Okay, so that's it student. ये था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. नेक्स्ट में हम सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ तक आज का लेक्चर जो है वो हम रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे का सेक्शन जो है वो डिस्कशन करेंगे. तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ एट योर होम. थैंक यू.